Good afternoon, everyone. Welcome to the YouTube channel of Vidhi Culture. Today, we are here to discuss the DU LL.B 2021 paper analysis. Why it is important to discuss the paper analysis of 2021? Because हम सभी जानते हैं कि DU LL.B के 2022 के entrance exams होने वाले हैं, and everybody is worried कि what kind of paper it will be and what are the number of questions being asked from which subject. So to clarify all those things, we are here with a new session of the paper analysis, and today we will discuss कि भाई कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, because there is no straightforward formula when it comes to the DU LL.B, because they do not ask question कि भाई इस सब्जेक्ट से इतना आएगा, इस सब्जेक्ट से इतना आएगा, ऐसा कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया इनका नहीं है. सो द क्वेश्चन मे वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. हो सकता है कि करंट अफेयर से कभी ज्यादा आ जाए, कभी जीके से आपके ज्यादा आ जाए, कभी हो सकता है लीगल जो लीगल रीजनिंग है उससे थोड़ा ज्यादा आ जाए. तो इट वेरीज विद ईयर टू ईयर बेसिस पे ये चेंज होता रहता है. सो वी विल सी कि 2021 के अंदर किस तरीके से यहाँ पे पेपर आया था और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आए. सो लेट्स बिगिन द टुडेज सेशन. सो before starting it, we must know that what is the the paper pattern is there. So the total number of questions which has been asked in the paper, and that is the 100 questions. And when it comes to the marks, so per question there is 4 marks allotted. 4 marks are there for every question. So the total marks counts to be like 400 marks, and there is a negative marking definitely, that is of 1/4. So अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो यहाँ पे आपके 1 मार्क्स जो है वो यहाँ पे डिडक्ट हो जाते हैं एक गलत आंसर के लिए, और वहीं अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको मिलते हैं 4 नंबर. सो दिस इज हाउ द पैटर्न. ये जो है अपना जो है पैटर्न है कि 100 क्वेश्चन आएंगे जो 400 मार्क्स के होंगे, और हर क्वेश्चन के आपके पास 4 मार्क्स होंगे प्रति क्वेश्चन, और जब भी आप कोई गलत आंसर करेंगे तो आपका 1 नंबर आपके मार्क्स में से कट जाएगा. सो नाउ कमिंग टू द analysis of the different topics which was there in the exam of 2021. So the very first, that is the current affair part, which is very very important because many questions from current affair comes into this examination. So when we talk about the 2021 examination, so there were about 16 questions. There were about 16 questions from the current affairs. What were the questions? If we look at the set 1 of the the question paper, then question number 4, question number 5, question number 6, question number 7, 8, 9, 28, 29, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 75. So in total there were about 16 questions. So it is a very very good number of questions coming into this examination. So you cannot ignore this section. आप इस सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. करंट अफेयर्स आपको आखिरी तक भी रिवाइज करके जाने हैं. एटलीस्ट आपके पास 6 से 8 महीने के करंट अफेयर तो होने ही चाहिए. बट कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि काफी क्वेश्चंस जो हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं हमेशा जो है पीछे भी पूछ लिए जाते हैं. हो सकता है वो 1 साल 2 साल पुराने भी हों. सो थोड़ा बहुत सरप्राइज आपके लिए हो सकता है, लेकिन आप अगर रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज देखते हैं तो इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर दैट क्वेश्चन. सो as I have told you that 16 questions from the current affairs. So in total there would be 64 marks for it. टोटल 64 मार्क्स जो है आपके करंट अफेयर्स जो है क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे. सो इट इज अ वेरी गुड नंबर. 64 मार्क्स जो है बहुत ज्यादा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट रिवाइज द करंट अफेयर्स. Now coming to the questions related to the international organizations like United Nations, ICJ and all these organizations which are there on the international level. So there were about 9 questions from there. आपके पास 9 क्वेश्चंस थे वहां से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो कि था क्वेश्चन नंबर 25, 26, 77, 78, 79, 80, 81, 82 and 83. So there were about 9 questions from the international organizations. So it also becomes very important to read about the international organizations, the structures, the head offices of those international organizations, the head of those international organizations. So this is very very important. आपको इसको भी यहाँ पे पढ़ के जाना है, because 9 questions means about 36 marks. आपके पास 36 marks यहाँ से आने वाले हैं. तो you cannot ignore this part also. This is very very important. तो यहाँ पे स्कोर करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, because there are
limited number of international organizations from which these questions come. तो आप एक बार इसको रिवाइज करके जरूर जाएंगे. Now coming to the next part, that is the general knowledge, that is the GK part, and it is mostly the static GK. Okay, the static part of the general knowledge, unlike the current affairs. So there were about 15 questions. 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से आए थे. और इस जनरल नॉलेज के अंदर कुछ लीगल जनरल नॉलेज भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल कई बार वो पूछ लेते हैं कि भाई इस चीज से रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट रिलेटेड जो केसेस हैं वो जनरली जो है एक वकील का नाम देके, लाइक एमसी मेहता वाज देयर, सो व्हाट काइंड ऑफ केसेस ही टेक्स अप. तो इट वाज द PIL with respect to the environment was the answer. So such questions are also there in the general knowledge part, static part. So there were about 15 questions from the static GK. That was question number 1, 3, 10, 11, 21, 24, 27, 57, 59, 60, 61, 65, 66, 85, and 86. So there were about 15 questions from the static general knowledge. So it also constitutes about 60 marks. So it is also a very big number, very big number. It can, make a lot of difference in your selection into the DU LLB. DU LLB entrance में आपका admission को decide करता है यहाँ पे ये part भी, because 60 marks is a very good number. Now coming to the English, so it varies. This time it was there were only 5 questions. It may vary, it may be like 7 or 8 questions or 10 questions, but in the last examination it was only 5 questions which were asked from the English paper, English questions. So it was 96, question number 97, 98, 99, and 100. So for 5 questions there were 20 marks. तो 20 marks का यहाँ पे इंग्लिश भी आया था आपका. It was not very difficult. अगर आपको इंग्लिश आपकी ठीक ठाक भी है तो you will be in the position to answer these questions. It will not be very, very difficult for you to score these marks. Now coming to the mathematics. Questions related to the maths. So there were 4 questions in this paper, 2021, 4 questions from the mathematics. Question number 30, 32, 34, and 35. And it constitutes about 16 marks. So maths also has 16 marks for you. So you have to prepare maths, to score these marks. Then coming to the logical reasoning. When we look at the logical reasoning, there were 3 questions, 3 direct questions from the logical reasoning, 31, 33, and 58 number question, which was there from the logical reasoning, and it constitutes about 12 marks. तो आपके यहाँ 12 नंबर जो है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग से भी बनते हैं. एंड इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट. इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट लेवल. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का आपके पास ये क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं. Then coming to the now the questions from the constitution and the legal, legal questions, legal subjects. तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि भाई constitution और जो legal subjects है वहां से कितने कितने questions आए हैं, because it also plays a very vital role when it comes to the clearing the DU LLB examination. So first of all, the constitution. तो constitution को जब हम देखेंगे तो there was about there were about 14 questions, 14 क्वेश्चन थे, and it constitute a very good marks. तो 14 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, नॉट ऑफ वेरी डिफिकल्ट लेवल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का भी नहीं आता है. It was like question number 2, 22, 37, 43, 44, 45, 71, 73, 74, 76, 87, 88, 94 and 95. So 14 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से बनते हैं, जो कि करीब आपके 56 मार्क्स के बनते हैं, 56 मार्क्स के यहाँ पे आपके बनते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप नहीं छोड़ सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ के जाना ही है. द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग इनटू दिस एग्जामिनेशन. नाउ कमिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और यहाँ पे मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ओनली द लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग की भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे. देयर आर सब्जेक्ट्स विद इन दीज. ऐसा नहीं है कि आप सिंपली जो है कुछ चीजें पढ़ के चले गए और वहां पे एग्जाम क्लियर हो गया. ऐसा नहीं है. आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे प्रॉपर. आइदर इट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ क्राइम्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट है आपको सेपरेटली इसको कैटेगराइज करके पढ़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप सिंपली वन लाइनर पढ़ के चले गए, कुछ पढ़ के चले गए एंड यू विल क्लियर द पेपर. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. So coming to the law of contract, there were about 7 questions from the law of contract. Law of contract से आपके पास 7 questions थे, like 46, 47, 48, 49, 50, 51 and 52. So there were 7 questions from the law of contract, और ये आपके constitute करते हैं about 28 marks. आपके पास 28 marks यहाँ से आते हैं
from the law of contract. नाउ कमिंग टू द फैमिली लॉ, अब हम आते हैं फैमिली लॉ की बात करते हैं, जिसके अंदर के हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के क्वेश्चंस आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द फैमिली लॉ आर फ्रॉम द हिंदू लॉ ओनली. So there were 3 questions from the family law, 38, 39 and 40. So it constitutes 12 marks, 4 marks each. So 12 नंबर जो है आपके फैमिली लॉ से आते हैं. Then coming to the law of torts. अब law of torts से कितने क्वेश्चन है? तो आपके पास 4 क्वेश्चंस आए थे law of torts से, 90, 91, 92, 93. So it was about 16 marks. आपके 16 मार्क्स का जो था यहाँ पे आपके पास था जो है law of torts. नाउ द नेक्स्ट वन इज द लॉ ऑफ क्राइम्स. अब आते हैं क्राइम्स, जिसके अंदर की जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम द आईपीसी एंड देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम द सीआरपीसी. सो वेरी फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द सीआरपी बस सीआरपीसी, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द आईपीसी. ज्यादातर क्वेश्चन जो है इंडियन पिनल कोड से ही आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16 वाज फ्रॉम द सीआरपीसी. 17, 18, 19, 20, 23. So there were 10 questions, so definitely it is 40 marks. Very good number of questions from the IPC. Now coming to the next part, that is the the judgment part. So ड्यू एलएलबी के अंदर आपके पास जो है जजमेंट से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, और जजमेंट जो है आपकी हो सकता है कि रीसेंट हो सकता है कि वो रीसेंट जजमेंट हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पुरानी जजमेंट से भी, जो लैंडमार्क जजमेंट से, इंपॉर्टेंट जजमेंट से वो पूछी जाए. तो आपको दोनों ही चीजें पढ़ना जरूरी है यहाँ पे, चाहे वो पीछे की जो पुरानी इंपॉर्टेंट जजमेंट है लैंडमार्क जजमेंट से, या फिर जो हाल फिलहाल में 1-2 सालों के अंदर जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई है वो भी आपके लिए पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है. और यहाँ से करीब 5 क्वेश्चन आपके पास आए थे, दैट वॉज 41, 42, 72, 84 एंड 89. So these were the question asked from the the judgments, and it constitute about 20 मार्क्स. तो 20 मार्क्स आपके जजमेंट से भी आते हैं, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, ये बात इस किस जजमेंट में कही गई थी, या इस जजमेंट में क्या बात कही गई थी. दे विल गिव यू सर्टेन ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज द राइट आंसर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसके अंदर की पेटेंट, ट्रेडमार्क और ये सारी चीजें आ जाती है, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ऑल दीज थिंग्स. सो जब आईपीआर की बात करेंगे, देयर वर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से आपके पास 4 क्वेश्चंस थे, दैट इज 53, 54, 55 एंड 56, एंड इट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 16 मार्क्स. ये भी आपके जो है 16 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे करते हैं. देन लीगल मैक्सिम जो है लास्ट टाइम जो था एक ही क्वेश्चन आया था, बट समटाइम्स ये 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में. सो यू कैन नॉट इग्नोर दिस ऑल्सो, लीगल मैक्सिम को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है. सो इट वॉज क्वेश्चन नंबर 36 and it constitute about only 4 marks. So you cannot ignore the legal maxim because sometime they may ask you 3-4 legal maxims. Now so this was all about the the different subjects which came in your examination, और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो आप इस बाइफिकेशन को देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना ज्यादा आ रहा है, और आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, और किस में अभी आपको और करने की जरूरत है. ये सारी चीजें आपको अभी देखनी होगी. अभी आपके पास टाइम है, एग्जाम्स की डेट आने वाली है, बहुत जल्दी ही आपके एग्जाम्स होने वाले हैं. सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द द बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स. आपको ये देखना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आपके यही सब्जेक्ट ज्यादा आएगा, लेकिन यू हैव टू सी द प्रोबेबिलिटी. लाइक कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका लगभग हर बार जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू द अदर लीगल सब्जेक्ट्स. वहीं आप बात करें लीगल सब्जेक्ट्स की, तो आईपीसी के अंदर से हमेशा ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं as compared to the others. Then comes the contract, then comes the tort, then the IPR and the judgment part and the legal maxim. तो इस तरीके से आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है और कौन सा सब्जेक्ट आपको बाद में करना है. तो it is up to you how you plan your studies. You still have a good number of days you can prepare for. अगर आपने अभी भी नहीं किया है, अभी भी बहुत सी चीजें बाकी हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो चुकी है, कुछ भी है. अगर आज भी आप चाहें, आज की डेट से भी स्टार्ट करेंगे तो इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है, अगर आपकी प्लानिंग सही हो तो. So this was all about the paper analysis of 2021. We will come up with new certain new things about the DU-LL.B examinations, because आपके एग्जाम बहुत पास है. तो we will tell you the important things about the examination, जो कि आपके पेपर में जाने से पहले जानना जरूरी है, चाहे वो important judgments हो, चाहे वो और बाकी चीजें हो. We will come up with the new videos very soon. So stay tuned with us, subscribe our channel for the new updates. Thank you so much. Thank you for joining. Thank you everyone.